स्लाइड नंबर 11 ट्विन पिक्स मॉडल। द ट्विन पिक्स मॉडल, यकीनन आपको स्लाइड में एक मॉडल नज़र आ रहा है। इसमें कुछ दो किस्म के रेक्टेंगल हैं और एक स्पाइरल है जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है। सो देख के शायद आप इसे गौर से देखें अगर तो पॉसिबल है यकीनन आपको कुछ समझ आ जाए, बट अनफॉर्चुनेटली वी डोंट हैव दैट प्रिविलेज दैट आई कुड आस्क यू कि आपके ख्याल में इसका क्या मतलब है, मॉडल आपको क्या बता रहा है। सो लेट मी टेल यू, इसको किसी भी ऐसी मॉडल या शेप जिसमें एक्सिस इन्वॉल्व हैं तो उसको पढ़ने का या उसको रीड करने का सबसे पहला तरीका ये है कि यू नीड टू लुक फॉर वेरिएबल अलोंग एक्स एक्सिस एंड एनी वेरिएबल विच इज़ अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अलोंग एक्स एक्सिस हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंस, ठीक है जी। और अलोंग वाई एक्सिस हमारे पास कौन सा वेरिएबल है जी, लेवल ऑफ डिटेल। अब लेवल ऑफ डिटेल को अगर हम लॉन्ग वाई एक्सिस है तो ये हम देखें कि ऊपर की जानिब ये जनरल हो रहा है, राइट, और ये नीचे की जानिब ये डिटेल्ड हो रहा है, राइट। जनरल का मतलब क्या है कि लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन लेवल हाई है, यानी लेवल ऑफ डिटेल कम है, और नीचे की तरफ डिटेल का मतलब ऑफ कोर्स कि लेवल ऑफ डिटेल जो है वो ज़्यादा है। अगर हम लॉन्ग एक्स एक्सिस को देखें इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंस को, तो इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंस जो है वो राइट साइड पे इसकी डिपेंडेंस वैल्यू जा रही है, ठीक है, और लेफ्ट साइड पे इंडिपेंडेंस वैल्यू है। इट मीन्स कि लेफ्ट साइड पे जो भी इसका एलिमेंट या वेरिएबल है वो इंडिपेंडेंट होगा, और राइट साइड पे जो है वो जो भी एलिमेंट या वेरिएबल है दैट विल बी डिपेंडेंट। अब अगर हम ये देखें तो लेफ्ट साइड पे यानी इंडिपेंडेंस वाली साइड पे वी हैव रिक्वायरमेंट्स, ठीक है, रिक्वायरमेंट्स का ट्रायंगल है। एंड ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन डिपेंडेंस, यहाँ पे जी वी हैव आर्किटेक्चर ट्रायंगल। इट मीन्स आर्किटेक्चर इज डिपेंडेंट। सो वी कैन से by looking at this model or by reading the model, we can say that requirements would always be independent, whereas architecture would always be dependent on requirements. और जो स्पाइरल है जो इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर रहा है, स्पेसिफिकेशन, वी कैन से कि ये रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन का हम जिक्र कर रहे हैं, राइट, जो यहाँ से शुरू होके एंड तक आ रही है। सो we can if we want to actually describe twin peaks model, we can describe the twin peaks model in let's say 3 to 4 points. सबसे पहला जो पॉइंट क्या होगा वो ये कि द ट्विन पिक्स मॉडल, अगर मैं आपसे पूछता हूँ या कोई आपसे पूछता है व्हाट इज द ट्विन पिक्स मॉडल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू टेल यू, वी नीड टू टेल दैट द ट्विन पिक्स मॉडल टेल अस द लिंक बिटवीन रिक्वायरमेंट्स एंड आर्किटेक्चर, कि ट्विन पिक्स मॉडल जो है वो रिक्वायरमेंट्स और आर्किटेक्चर के दरमियान लिंक बताता है। नंबर टू, व्हाट इज ट्विन पिक्स मॉडल? रिक्वायरमेंट्स वुड ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट एंड आर्किटेक्चर वुड ऑलवेज बी डिपेंडेंट ऑन रिक्वायरमेंट्स। हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं, हम इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि रिक्वायरमेंट जो है वो हमेशा इंडिपेंडेंट होगी और आर्किटेक्चर जो है वो हमेशा जो है रिक्वायरमेंट्स पे डिपेंडेंट होगा। सेकेंड पॉइंट ये था। थर्ड पॉइंट वुड बी when the abstraction level of requirement specification is high, right, the corresponding architecture, the abstraction level of the corresponding architecture would also be high। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि ऊपर की तरफ जो है वो जो ट्रायंगल है ये उसकी चोन जो है वो काफ़ी नैरो है, इसी तरह आर्किटेक्चर वाली ट्रायंगल है इसका भी चोन जो है वो काफ़ी नैरो है। So that's why we say when the abstraction level of requirement specification is high, the abstraction level of corresponding architecture would also be high। क्योंकि हमने ये तो कह दिया ना पहले सेकंड पॉइंट में बता दिया कि रिक्वायरमेंट जो है वो ऑलवेज इंडिपेंडेंट है और आर्किटेक्चर जो है वो हमेशा रिक्वायरमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होगा, राइट। और थर्ड पॉइंट ही की बात उसी को हम कंटिन्यू करते हैं कि व्हेन द as long as the requirements or when the abstraction level of requirements becomes low, जैसे नीचे आप देख सकते हैं कि ये स्पाइरल आहिस्ता ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और एक एक्सट्रीम पॉइंट पे ये लो लेवल पे ये जाके ख़त्म हो रहा है। तो वी कैन से कि व्हेन एब्स्ट्रैक्शन लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट्स और द स्पेसिफिकेशन इज लो, द एब्स्ट्रैक्शन लेवल ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग आर्किटेक्चर वुड आल्सो बी लो। इसका मतलब क्या है लो एब्स्ट्रैक्शन लेवल का, कि जब रिक्वायरमेंट ज़्यादा डिटेल होंगी तो कॉरस्पॉन्डिंग जो है आर्किटेक्चर वो भी ज़्यादा डिटेल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं थर्ड पॉइंट को कि व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर लेस डिटेल्ड,
ठीक है. When requirement specification is less detailed, the corresponding architecture would also be less detailed. Less detailed का मतलब क्या है? High level पे, high abstraction level पे. As the or when the requirements become more detailed, ठीक है, or when the detail level of requirements achieves its maximum point, the corresponding architecture would also attain its maximum point in terms of level of detail. ठीक है जी. थर्ड पॉइंट मैं बार बार बता रहा हूँ कि when requirement specification are less detailed, the corresponding architecture would also be less detailed, and when the requirements specification get more detailed, the corresponding architecture would also be more detailed or highly detailed. ठीक है. I hope this is clear. Going to tell you again 3 points. Okay, what is the Twin Peaks model? Number one, Twin Peaks model tells us the relationship between software requirements and software architecture. Number two, requirements would always be independent, whereas architecture would always be dependent on requirements. Number three, when the abstraction level of requirement specification is high, the corresponding architecture would also be at high abstraction level, and when the abstraction level of software requirements is low, the corresponding architecture would also be at low abstraction level. Point 3 को हम दोबारा इस तरह से भी बता सकते हैं, when requirements are less detailed, the corresponding architecture would also be less detailed, and when the level of detail of requirements is high, the level of detail of the corresponding architecture would also be highly detailed. I hope this is much clear now. It's quite easy to understand if you are able to actually interpret the model or the diagram. I hope there is no difficulty in understanding what does it actually describes.